Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I'm your science teacher, Miss Mehreen Yasir. I hope you all are fine at home. This is your science class. Please take out your science books and open the page number 72. Today we will learn unit number 8, sounds. Please write date and day on page number 72, page number 73 and page number 74. Dear students, listen carefully. What sounds can you hear? Can you hear the sound of clock? Yes. Now we will learn the keywords for unit number 8. The first word is sounds. Sounds. Sounds means आवाज. The second word is loud. Loud. Loud means ऊंचा. The third word is soft. Soft. Soft means naram. The fourth word is damage. Damage. Damage means kharab. The fifth word is voice. Voice. Voice means आवाज. This is the page number 22 of school workbook. This is your homework to complete this page. Now, which things we will learn? Number 1. We make sounds with our voices and hear them with our ears. हम sounds को अपनी आवाज़ से बनाते हैं and how we hear them? We hear them with our ears. Number 2. Sounds can be loud or soft. Sounds loud हो सकते हैं and soft हो सकते हैं. Number 3. We need to protect our ears. हमें हमारे ears को protect करना चाहिए. Number 4. Sounds can be made in different ways, hitting, blowing and shaking. We make sounds with our voices. We hear sounds with our ears. Some sounds are very loud. कुछ साउंड्स जो होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं जिन आवाज़ों को सुन के ऊंची सी आवाज़ें होती हैं और उनको सुन के हम एकदम से डर जाते हैं. These all are loud sounds. These all are unpleasant sounds. For example, there is a picture of a traffic jam on a road. There are lots of cars, lots of car horns. There are lots of motorcycles. These all are loud sounds and these all are unpleasant sounds. And some sounds are very soft. For example, if we visit the area near to the village where lots of trees, lots of plants, we hear the sounds which are very soft. अगर हम ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे बहुत से ट्रीज़ हों, बहुत से प्लांट्स हों, वहाँ पे नेचर हो, वहाँ पे जो है वो विलेज हो, तो हमें ऐसी साउंड सुनने को मिलती हैं जो कि बहुत प्लेजेंट होती हैं, जो कि सॉफ्ट साउंड्स होती हैं. Yes, now animals also make sounds. Different animals have different sounds. हमने देखा है ना एनिमल्स के डिफरेंट साउंड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स कैसे बोलते हैं? डॉग्स बार्क. एंड कैट्स, कैट्स कैसे बोलती हैं? कैट्स मियाऊ. कैट्स. एंड बर्ड्स चिप एंड स्क्वैक. और बर्ड्स कैसे बोलते हैं? So, the different animals have different sounds. Machines also make sounds when we use them. When we use swing machine, it makes a sound. जब हम swing machine को अपने clothes को stitch करने के लिए use करते हैं, तो swing machine के अंदर से आवाज़ आती है. इसी तरह when we use juicer blender machine to make juice, it makes a sound. And when we use a machine, drill machine, then it also make a sound.
Now these all are musical instruments and we make a sound from these musical instruments and music is a sound too. म्यूजिक भी एक साउंड होता है. Now remember dear students, we must protect our ears. हमें हमारे ears को protect करना चाहिए. Loud sounds can damage our hearing. जो ऊंचा sound होता है, जो बहुत loud sounds होते हैं, वो हमारी hearing को damage कर सकते हैं. इसीलिए हमें आहिस्ता बोलना चाहिए और हमारे ears को हमें protect करना चाहिए loud sound से. Okay, dear students, thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourselves.